एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. What did we do last time? सर एक सम दिया था आपने, तो वो टू सम सर्कल्स का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें आपने एक सम करवाया था। उसमें एक पार्ट होमवर्क दिया था, सी पार्ट। सर बी पार्ट भी वापस समझा सकते हो? We are having only one class. यस सर, और भी खाली एक क्लास होता है आपका। सर फिक्स नहीं है, कभी कभी दो भी हो जाते। ओके, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। एक क्वेश्चन किया था, एबीसी पार्ट था उसका, राइट? नाउ we are way behind. I'll tell you, at this rate we won't be able to complete circles before the thing. Before offline start. Before offline starts नहीं होगा complete. सर आपका वीक में सिर्फ एक ही क्लास होता है? Okay. सर वो सम का सी पार्ट बाकी है। What is the part? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड What is the question? क्वेश्चन क्या था? सर हमें लेंथ निकालना था, डायरेक्ट कॉमन लेंथ का फॉर्मूला नहीं दिया था मैंने? नहीं सर, नहीं सर, बस वो पहला सम ही था जो आपने कराया था। लेंथ का फॉर्मूला नहीं दिया मैंने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नो सर, सर आपने बोला कि आप करोगे वो। अच्छा, ओके। Then I just need to tell you what the length of direct common tangent is. देखो, सपोज करो दो सर्कल है, वैसे लेंथ व्हाट वाज द, उसमें और बस इतना ही क्या पूछा था? सर 3 पार्ट थे, पहले 2 पार्ट हो गए थे, थर्ड पार्ट लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, वो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो बहुत इजी है, इट्स जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, बट मैं इसका फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। सपोज ऐसे सर्कल्स इस तरह से, और यहाँ पे मुझे ऐसे टेंजेंट बनाना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बराबर ए बी। ठीक है, इनके रेडियस r1 r2 है, ये सेंटर दिया है, और सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d दे रखा है। ठीक है, मतलब ये लेंथ d दे रखा है। सो आई नीड टू फाइंड दिस। ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो ये पैरेलल हो गए आपस में, और ये r1 है, ये r2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? यहां से ऐसे ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हम कंप्लीट कर दिया। सो इसको हम x बुलाते हैं, पॉइंट को। सो ये जो लेंथ होगा ये भी लेंथ ऑफ डीसीटी होगा, बराबर। अच्छा, ये लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? सर R1। यस, r1 रेडियस ऑफ ऑपोजिट रेक्टेंगल है ना, तो ये लेंथ कितना होगा? R2 माइनस R1। r2 माइनस r1। अच्छा, अभी हम क्या लगाने जा रहे हैं? सिमिलैरिटी, पाइथागोरस नो। ट्रायंगल C1 x C2।
So can we apply Pythagoras and we can say d square is this thing plus r2 minus r1 square बराबर से अपने को लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा सही है Yes. इसमें आपने This is- ट्रायंगल कौन सा लिया? C1x C2 ठीक है ये 90 डिग्री के बाद x C2 ठीक है नाउ सिमिलरली हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी ऐसे ही आता है कंस्ट्रक्शन पे I'll show you and then I'll ask you to copy both of them length of transverse common Sir, could you wait for a minute, sir? Sorry, Right? So I told you, so we'll give time together to write. Okay, sorry. Similarly, you have length of transverse common tangent. So suppose ये R1 है और ये tangent है ये R2 है. Again, they are perpendicular to the same line, so this is going to be parallel to this. ये AB होगा. Okay, AB is the length of transverse common tangent. और centers के बीच में जो distance है ये C1 है ये C2 है so C1 C2 जो length है वो D है बराबर Yes. whole length is D starting से लेकर end तक now again here what I'm 9:30 going ठीक है? to do a construction हाँ? वो आधा घंटा का ही क्लास है. सीमांत और माइक इज ऑन. I'm going to do construction so I'm going to again create a rectangle here parallel to AB ऐसे इस तरह से ऐसे करेंगे इसको भी ऐसे एक्सटेंड करेंगे रेक्टेंगल बन गया ठीक है ये जो लेंथ है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लेंथ के ही बराबर हुआ कि नहीं Yes. AB के बराबर हुआ ना सही है ये पॉइंट को मैं x बुलाता हूँ ना ये लेंथ भी R1 होगा कि नहीं रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट R1 तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया R1 plus R2. R1 plus R2. R1 plus R2 now look at this triangle same thing C1x C2 सेंटर्स का येलो लाइन फिर ये x पॉइंट कंस्ट्रक्शन वाला क्या लगाएंगे इसमें फिर से पाइथागोरस लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे d square is hypotenuse which is this thing plus R1 plus R2 correct so length of transverse common tangent is this समझ में आ रहा है Yes, ये sir. सेम कंस्ट्रक्शन करना है दोनों फिगर में ये आंसर आता है दोनों इसमें R1 plus R2 इसमें R1 minus R2 ठीक है you can copy this first सर आपने यहीं से स्टार्ट किया था ना हाँ did you teach or do you teach so you teach in no I don't teach in the other college not anymore
Sir, in which all centers you teach, sir? I don't teach on Western line. Sir, done. हो गया? Okay, ये वाला. So 1 minute can you go? Done, sir. Done, sir. हाँ, ये हो जाए तो बता दो. Done, sir. Okay. एक second, sir. Sir, done. Done, sir. हाँ. हाँ. एक क्वेश्चन है.
Okay, you can see the diagram. Yes, sir. Yes, sir. 4 रेडियस है 9 रेडियस है, ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है. ठीक है. Now first part इसका क्वेश्चन है क्या है, फाइंड AB. So the Second- circles are in contact now. हाँ, they are touching each other. Yeah. सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है कि एक और सर्कल है जो हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं, जो ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है. ठीक है. अब कैन यू गेस व्हाट द क्वेश्चन इज नाउ? And equation of circle. Sir, length of the radius of the smaller circle. हाँ radius करने का है. फाइंड R. फाइंड R. रेडियस ऑफ दैट स्मॉल सर्कल. और तुमको टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन की लेंथ से ही निकालना है. ठीक है. ये टच कर रहा है, यू कैन कॉल इट C, let's say. So, but here the radius are not given in the form of coordinates. It is given in like just like 4. Radius will never given as coordinates. Why would radius be given as coordinates? Sorry, sir. The center. I mean, center. Center would be. उसकी जरूरत नहीं है. Okay, without that we can start. हाँ, फर्स्ट का 12 है. That is from the formula. So second का आंसर. हाँ, करो, सोचो तुम. बी का आंसर 2 नहीं है. Yeah, 36/25 is correct. हाँ, 36/25 is right.
ओके, सबसे पहले तो अगर हमें ए बी निकालना है, सो सर्कल्स टच कर रहे हैं, सो व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर डी इज r1 plus r2, करेक्ट? दिस इज 13. सो ए बी का जो लेंथ होगा वो बेसिकली होगा d square minus r1 minus r2 whole square, करेक्ट? So 13 square minus 5 square, ये तो 12 हो जाता है, ये फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट है. ओके, नाउ ये तो ए पार्ट हो गया. अच्छा, अगर अपने को छोटे सर्कल का रेडियस निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, ये वी कैन यूज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हियर आल्सो. क्या हम लोग एसी का लेंथ निकाल सकते हैं? Yes, sir. सो एसी का अगर लेंथ निकालना है, उसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सर्कल्स, between the It will be equal to 4 plus r. 4. 4 plus r, sum of the radius. So length AC, length of direct common tangent, which is d square minus r1 minus r2 square, correct? So this is 4 plus r whole square minus 4 minus r whole square, which is 16r आएगा. तो r square और 16 कट जाएगा, r square term will also get cut. Similarly, अगर मुझे लेंथ CB निकालना हो, which is the other, this is also common tangent का लेंथ only, ना? ये दिख रहा है, length of the direct common tangent from this circle to this circle, point of contact to point of contact. तो अब एक का r है, दूसरे का 9 है, they are touching each other externally. So इसको भी हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे जो d होगा वो 9 इसको 4 रूट r में छोड़ So सकते why हैं. can't we take CB mod like सर directly? We can- मॉड ऑफ एसी को हम लोग 4 रूट r में छोड़ सकते हैं. अरे वो एक ही बात है, वो हो जाएगा, उसमें कोई क्या टेंशन ले रहे हो. अच्छा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36r, ठीक है ना? ये AC और CB निकालने का क्या पर्पस है, क्या मतलब है? सर दोनों का सम 12 है. हाँ, दोनों का सम 12 है, दोनों का सम 12 है. ठीक है, ये तो 4 रूट r एंड 3. सो रूट r की वैल्यू हो गई 12/10, 6/5. सो r कितना हो गया? 36/25. 36/20. So, समझ में आ रहा है? हाँ, so why समझा. can't we write CB as like 9 plus 4? CB was 9 plus 4. 9 plus R, sir, like a 9 plus 1. CB is not 9 plus r. So, but we wrote AC as 4 plus R. अरे, where we wrote AC as 4 plus r? So you have written AC mod is equal to D is equal to 4 plus R, right? That is to find AC and D is equal to 4 plus r. Okay. ठीक है, ये कॉपी कर लो.
हाँ ये हो जाए तो बता दो। Done, sir. Okay. Now, now we have to do equation of direct common tangent and length. Sorry, length नहीं, length तो हो गया. Equation of direct common tangent and transverse common for two circles of unequal radius. ठीक है? तो अभी तक पिछले क्लास में equal radius का हमने किया था. Okay. So what I'm going to do is I'm going to explain this with the help of an example. Suppose karo, I have two circles. Okay. अच्छा, first of all tell me ये जो circles हैं ये उन 5 केसेस जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, सर्कल्स के 5 सर्कल बनाए थे मैंने, 5 डायग्राम्स बनाए थे मैंने. Yes, sir. Yes, समझ sir. आया? अच्छा तो कौन सा केस है, कैन यू फिगर इट आउट? कैन यू फिगर आउट व्हिच केस इट इज? Yes, sir. 1 minute. सेंटर बताओ उसका क्या है? So first one So center is 1, 1 3 by and 1, minus 3. 3, 1,3. 1. Minus 3, 1. और इसका रेडियस क्या है दोनों के? First का 1 है. फर्स्ट का 1, सेकंड का Second का 3. नाउ कैन यू फिगर आउट कि कौन सा केस है आउट ऑफ द 5? so not touching. कौन सा? Sir, first case, So I guess. first there will be How many 4. figure is first case? So they won't be touching each other. They will be away from each other. Yes, sir. So first case. How do you figure it first case? So the distance पहले between the सौ. centers is too big, and the radii. Distance between centers कितना है? It's greater than 4. 2√5 sir, greater than 4. Yes, sir. 20 है. R1 plus R2 कितना है? 4. 4 है, sir. which is basically root 16. So clearly D is greater than R1 plus R2. The circles are far apart. सबसे पहले ये important होता है डायग्राम बनाने के लिए. Okay, now 1,3. You have a bigger circle. Let me draw a very Now what I'm going to do is, see this line joining the centers, correct? दिख रहा है? Do you believe that about this line there is up-down symmetry? Yes, sir. Yes. Yes sir. sir. Yes. Diagram is symmetrical like this, in this manner, correct? Okay. Now the direct common tangents, they're all going to converge at one point here. Should draw the circles. To draw the direct common tangent like this. Okay, let's assume this is direct. Okay. This direct common tangents, they are going to converge at some point. They're going to be concurrent.
Okay, tell me, do you think they will meet on this line or they will meet somewhere here maybe? Yes. They'll meet on the line Why? because it's symmetrical. The part where they meet at that point, it has to be on the line. Yes, because the diagram is symmetrical, so Huh. it can't be on top or bottom. It has to be on the dead center on the line itself. Correct? Yes. Okay. First important thing is finding point P. Now, how to find point P is very simple. We use section formula and similarity. How do we do that? Do you see two similar triangles? Yes. Yes, sir. ये one radius है, ये second radius है. So they are similar, right? So can I say that since we are seeing two similar triangles, can we also conclude from this that P ka distance from the centers will also be in the same ratio? Yes, sir. Yes, sir. What will this ratio be? R1 by R2. R1 by R2, correct? By similarity. Okay. So what this means is that we can conclude, which is basically 1/3 in our question. Yeah. So can we conclude that P divides C1, C2? C1, C2 matlab centers externally in the ratio R1 is to R2. मतलब 1:3. ठीक है? 1:3 है लेकिन एक्सटर्नली है, बाहर है, अंदर नहीं. समझ रहे हो? ओके. एक्सटर्नल का फॉर्मूला आता है, ये m/n होता है. तो जो P आता है वो क्या आता है? mx2 minus nx1, तो mx2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. -3 इंटू ये ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सही है? ठीक है. ये बनेगा -3 अपॉन m-n. सिमिलरली y क्या आएगा? वो ऐसे क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1, 3 3 जा 9 on 1 - 3. ये समझ में आ रहा है? Yes, -x by sir. -2 p -9 -8 by 4. So p is 3,4. Is this clear? Okay. एक बार अपने को p आ गया. Now the question becomes much easier because ये question अब बहुत हमने पहले कर चुके. P is 3,4. Now I'm going to change the diagram. I don't really need the big circle. I just can play with the small circle. So I have the small circle. I have the point P 3,4. यहाँ से ओरिजिनेट होने वाले टेंजेंट्स आप बनाएंगे. अपने आप जाके बड़े सर्कल को तो करना ही वाला टच. ठीक है? उसकी इक्वेशन निकालेंगे. इसका सेंटर 1,3, रेडियस 1. ये टेंजेंट्स निकालते कैसे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल. So power of point. पावर ऑफ पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है. Sorry, length आता है. इसको mx minus ये इक्वेशन याद है? स्लोप फॉर्म, बट फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड सर्कल. Yes, sir. स्टैंडर्ड के लिए ऐसे होता है. नॉन Yes, sir. स्टैंडर्ड ऐसे है. Yes, sir. ओके. और फिर बोलेंगे कि 3,4 is satisfying this because ये टेंजेंट 3,4 से पास कर रहे हैं.
ये कट हमारा 0 या 4/3 सही है। स्लोप आ गए इनके 0 और 4/3। इसका स्लोप है 4/3, इसका स्लोप है लेट्स से 0, तो इनकी इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट्स की। हाँ सर। दो पॉइंट फॉर्म लगा Yes. सकते हैं, ठीक है। ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अभी बात समझ में? इक्वेशन Yes. दिस इज क्लियर। Yes, sir. ओके, सो ये थोड़ा लेंदियर क्वेश्चन हो गया है, बट प्रोसीजर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले क्या करना है, ये कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे सिमिलैरिटी से, और सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट पी निकालो। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इज फ्रॉम पी यू फाइंड द टेंजेंट्स ओरिजिनेटिंग यूजिंग स्लोप फॉर्म। समझ में आ रहा है? बस इतना करना है। सो सर इसके लिए ये कोई शॉर्ट मेथड है? नहीं, शॉर्ट मेथड तो मैं ये क्यों बता। सर थोड़ा ऊपर। So, so ऊपर could you क्या है? scroll ऊपर up? तो पिछला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ये सर तो इसका आप कोई जनरल फॉर्मूला देने वाले हो कि हम लोग को डायरेक्ट यही यूज उसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। So could you scroll down? Yeah, 1 second. Sir, can you scroll up 1 second, sir? Just 1 second. There's nothing on top. Previous question है. Unless you haven't copied that. Let others copy. Have you copied that or not? Sir, I just need to check, so that's why I asked you to go up for 1 second. 1 second, 1 second. Let people copy this first. सर जो रेशियो होगा वो हमेशा R1:R2 ही होगा ना? हाँ हाँ, R1 is to R2.
Sir, done. Sir, done. So 1 minute. Sir, 1 minute. Done. हो गया? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Sir, Okay. in this actually, like we have to just do this method or like this, no? You have Is to there use or any other formulas there? what? Formula for what? No equation of DCT, sir. No, there is no formula for this. Okay, sir. Okay.
Now, similarly, equation of transverse common tangent. क्या आएगा? So this is actually pretty similar. So let's say I have the same two circles. Okay. I will draw the transverse. So first of all, I'll draw the line joining the centers. Okay. And then I will draw the transverse common tangent. Okay. Now the transverse common tangents, they are going to converge at one point. Okay. This point B, same like with the direct. But instead of doing it externally division, it's now going to do internal division. You understanding what I'm saying? Yes, sir. And again, can you see two similar triangles here? Yes, sir. So again, by similarity and section formula, we'll find P first. Now this length is 1 and this length is 3. So can I say ये section 1:3 होगा? Yes, sir. Internally, but okay. Can you find the question now by yourself? Can you do it? Can you try? Yes. Find P as well as the transverse common tangents. Can you do that? Yes. Yes. Sir, could you repeat what you had said, sir, at last? Last में बोला find the So coordinates of center you are giving, or we should we do it like taking variables? coordinates of The same coordinates as last question. previous question की तरह. Oh, okay. I must have not heard it. Sorry. Because radius भी मैंने same दिया है.
ओके p की वैल्यू क्या आ रही है बताओ पहले. 0,5/2. Yes. Yeah. P will be -3 plus 3 into 1 upon 1 plus 3. 1 into 1, 3 into 3 upon 1 plus 3. So this will be 0,5/2. Correct. And once you do that, then you don't need the bigger circle. You just need the smaller circle. You need the point. Why? Because जब हम tangents बनाएंगे वो अपने आप जाके बड़े सर्कल को वैसे ही टच करना है. तो ये सेंटर इसका 1,3 है, रेडियस इसका 1 है. We'll use the slope form now. Correct? Yes, sir. And then we are going to say this is being satisfied by 0,5/2. The tangents are passing through 0,5/2. Yes, sir. So you just substitute that then. So we are going to get something like this. इससे कुछ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes. When you square, So m square cancel हो रहा है. हाँ sir, m के सिर्फ how एक many ही roots होगा. are you getting? 1. 1 root. And how many roots are you Sir, supposed only to get? 2. Sir, 2. 2. We have already verified that D is greater than R1 plus R2. So we are supposed to get 2 transverse common tangent. And why are we getting only one slope here? The one Sir, So क्योंकि in एक y not axis defined. है ना, And will be infinity. x is equal to 0. हाँ, दूसरा वाला not defined होगा. समझ रहे हो? दूसरा not defined होगा. Correct. Yes. Okay. So we have already done a question like this before, right? I explained this to you, know. Can you just tell me why it is not defined? Because दूसरा slope होगा. We वो can't get vertical m equal to not vertical defined in tangent an होगा. equation. Vertical tangent का not defined होता है ना slope. Oh, okay, sir. दो Sir, tangents है लेकिन अगर दो होते तो इक्वेशन से आते ना. क्यों नहीं आ रहे हैं? इक्वेशन से तो सिर्फ डिफाइंड वैल्यू आएगी ना ऑफ m. नॉट डिफाइंड वैल्यू कैसे आएगी? बट वर्टिकल लाइन होता है लाइफ में. नाउ ये 5/2, 0 से पास करेगा बराबर. Yes. एक तो अपना ये हो गया. दूसरा वैसे तो इन्फिनिटी, वैसे तो हम इन्फिनिटी रॉन्ग है. इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे 0 नहीं हो जाएगा ये आंसर करेक्ट है. So y axis. हाँ, y एक्सिस. तो ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. इज दिस क्लियर? ठीक है. Yes, sir. Can copy this part. एक मिनट नीचे जाइए ना प्लीज. ये पहले anybody needs to copy this? सर नीचे स्क्रॉल करो ना. Sir, done. Okay.
Sir, since we talk already that DCT, is there any possibility that using that we can take TCT, sir? What? What are you saying? Is there any possibility that we can what? Sir, actually, we already took DCT, right? So using that, is it possible to derive for? Is it possible to derive for the TCT? Sir? No, not really. By the way, just a warning. Just because ये question का result आया है, so look at the slopes of the direct common tangent and transverse common tangent. So m is equal to infinity means in that case we can say it as 90 degree अरे एक with मिनट रुको, respect to एक the मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. Look at the slope of what we got here. What are the slopes here we got? The perpendicular 4/3 and horizontal line, बराबर? यहाँ पे slopes क्या आ रहे हैं? infinity Minus और three by four minus and four. minus vertical. 4/3. ठीक है, ये क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आ रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. However, this is not always the case, so don't assume. Direct common tangent and transverse common tangent need not be perpendicular. That depends on the diagram. So there is absolutely no correlation between the that slopes of the two. that depends upon the division, right? That radius and the That you have to distance. calculate in all questions अगर पूछा जाए तो, ठीक है? Okay, sir. So, but it looks like that we are flipping the slope of the DCT and then putting a negative sign. तो Yeah, different perpendicular है, वही तो मैं बोल रहा Coordinates हूँ, लेकिन also ऐसा नहीं है. हाँ, ये हो गया तो बता दो, स्क्रॉल डाउन. Done. Okay. Now, we're going to start this topic. Sir, can you scroll up a little bit? Okay, sir.
We're going to start with family of circles. Family of circles is like family of straight lines. Okay? It's basically collection of circles which have some common property. So you could have a circle or circles whose equation is something like this, where lambda is a variable. Okay. Now, as lambda varies, what kind of circles are we going to get from this equation? The concentric circles with different radius. We're going to get different standard circles, right? Yes. And they're going to Concentric form. circles. They're going to form concentric circles, right? Is this clear? So this is called family of concentric circles as lambda varies. Now you can't have everything in the equation known to you. If everything in the equation is known, then the circle is fixed. But if there is at least one variable in the equation, then you can sort of change that variable and get different members of the family. You understanding what I'm trying to say? So So, if for all- something to represent equation of a family of circles or something like that, there must be at least one variable. Everything can't be fixed. All coefficients, all values cannot be fixed. You understanding? एक variable होना जरूरी है. You understanding this point? So, but more than one is possible, sir. No, only one variable. Only one. so more than one variable is unknown, then it's not a family. नहीं, वो हम नहीं करेंगे इस chapter में. वो JEE में नहीं करेंगे. Now, there are several types of families that we're going to encounter. One second, just give me. So we're going to encounter three types of families. Okay. One is called common chord family. This is the first one. Now, what's a common chord family? It's basically like this. Let's say two circles are intersecting at some points A and B. So this is A, this is B. Now, how many circles will pass through A and B? So only two. Infinitely many. Yes, sir. Infinite circles. Infinitely many circles will pass through A and B. You can have a circle like this also. ऐसे एक circle possible है? Is it? So in infinitely many circles pass through A and B. So this actually they form a family. Form a family of circles basically, which is called common chord family because AB is the common chord. So, You understanding? so there would also be like common point family now, because infinite circles also pass through one point. Common point नहीं होगा. Common point वाला में दो variable आएंगे. We're not going to talk about that. We're going to talk about specific families only. वैसे तो बहुत सारे हजारों families होंगे. We're not going to talk about that. Specifically इन पे करेंगे. This is common chord family. Now, second one. The second one is called common tangent family. Common tangent family क्या होता है basically? एक line है, एक point है, and all circles are basically touching the line at this particular point. ऐसे टच कर रहा है. ठीक है? ऐसे कुछ मैग्नेटिज्म टाइप का कुछ डायग्राम बन रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, in each of these families, okay, can you tell me, ये वाले family में, what is the smallest member of this family? The diameter ABS diameter. Diameter. Yes.
This is going to be circle with AB diameter. Circle with AB diameter. I'm going to rub this off. Just draw a better picture. So let's say you're drawing a circle with AB diameter. This one. This is going to be the smallest. You understanding? Okay. What about here? What is going to be the smallest member here? The point circle. हाँ, सर्कल छोटे छोटा होते जाएगा तो अल्टीमेटली एक पॉइंट बनेगा, राइट? तो यहाँ पे जो पॉइंट सर्कल होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, करेक्ट? ठीक है, यस। नाउ एक थर्ड फैमिली भी है, लेकिन वी कांट डिस्कस दैट राइट नाउ बिकॉज़ उसकी थ्योरी नहीं पता, व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉमन रेडिकल एक्सिस फैमिली. I can't, we'll do later. So we have. I we don't know can't radical talk axis about now. this now. What? We don't know Why, radical sir? axis now. अभी नहीं करेंगे, we don't discuss about it. ठीक है? So we only discuss about these two, first two. हाँ बोलो क्या? Sir, in the common tangent family, does the point of tangency has to be the same for all? It's same, it is same, has to be same. Okay, sir. सर ये भी एक केस हो सकता है ना, सर्कल्स विद ये सेम है, सेंटर. ये है, लेकिन हम इस ये ट्रिवियल है, ये बहुत इजी है, इसके बारे में फिर हम बात नहीं करते क्योंकि इसका एप्लीकेशन. Can you please scroll down? Yes, sir. Sir, could you scroll down? Yeah.
So by smallest member, you are meaning area wise, right? एरिया वाइज मतलब रेडियस और एरिया तो वही हो गया ना, पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. स्मॉलेस्ट और किसको बोलेंगे? So could you scroll down? क्या हुआ? I didn't understand what voice is too low. सर she's scroll up asking करना to बोल रहे। He's asking to scroll up. सर इसमें बेसिकली ए बी जो लाइन होगा वो हर सर्कल का कॉर्ड होगा ना? हाँ, ए बी लाइन सेगमेंट होगा। यस। So, but in the second exam, does it involve more than one variable, sir? No. No. Then it's like more that one, sir. That it is coming on the both sides, right? नहीं नहीं, तुम उसका वो build when we come to that we'll see. कॉमन रेडिकल एक्सिस के लिए प्लेस छोड़नी है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत छोड़ो। हाँ, Sir, if I take G as the variable, then would that be a family, like everything else except for G is known? Then we can call that a family. what? In the in the general equation of a circle, if I take तुम्हारी G आवाज as बहुत कम आ रही है। oh, sorry. Am I audible now? No. Can you type it? If you are Sir, able he to- is audible for us. Okay, can you repeat what he's saying? Can you tell me what he was saying? I asked that in the general equation of a circle, if you know everything except for G, like the G is the variable, then will that be a family? Yeah, that will be a family. देखो फैमिली का मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक ये वाला फैमिली वो वाला फैमिली, बट इट विल डेफिनेटली बी अ वन, इट विल बी अ फैमिली. If anything is variable, it is going to be family. So हम उतना एकदम जनरल थियरी में नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक ये दो वाले करेंगे. But if anything is unknown to you, it is going to be a variable circle. And if it's a variable circle, it's going to be family of circles. You understanding? Okay, sir. Okay. Now, I mean, you could have all sorts of things. अभी मैं अगर if I can go crazy in ideas, like you can have one circle. मैं ऐसा कुछ भी ऐसा बनाता हूँ. ये देखो, suppose एक fixed circle है.
और एक फिक्स लाइन है, and suppose a variable circle is supposed to touch these two, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब you getting what I'm trying to say, right? ये दोनों को टच कर रहे हैं externally. So I am still getting a family of circles, Yeah. but we don't talk about this. सर फैमिली होने You're के not, लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, दो नहीं, फैमिली होने के लिए 2-3 वेरिएबल, 3 नहीं, 2 भी वेरिएबल हो सकते, उसमें कोई इशू नहीं है, but we talk in JEE, we talk only about these two. ठीक है? So now let us come to the theorem. This is for the common chord family. Okay, so common chord family देखो ऐसा. So see the diagram. Okay. Now let us say that this circle is a circle S1 equal to 0. Now S1 equal to 0, when I say it, actually what I mean to say is this. Let's say this is a circle whose equation is known to us. This is another circle. Okay. S2 equal to 0, meaning it is this. Now, let's say these circles intersected E and B. Okay. So the theorem goes like this. If two circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 intersect at A and B, then any circle through A and B is of the form S1 plus lambda, sorry, S2 equal to 0. Where lambda is not minus 1. Okay. So does this give you a feel of family of lines? By the way, before I explain this to you. यस सर. Family of line में L1 Yes, plus sir. lambda add किया था ना हमने? Okay. Let me explain this. So what the theorem basically says is any circle जिसकी शक्ल ऐसी दिखती है, is a circle which passes through A and B. Okay. Now this is actually not that hard to see. Why? देखो, let me give you an example. Suppose I have a circle x square plus y square minus 2 equal to 0, and let's say I have another circle x square plus y square, and let's say I have minus 2x equal to 0. Suppose I have these two circles. Now, can I say that 1, 1 is an intersection point? चेक करो 1, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है या नहीं, ये दोनों को कर रहा है कि नहीं satisfied? Yes. But 1, -1 is also an intersection point. Do you agree? Yes, sir. Yes or no? So can I say A and B पे intersect कर रही है 1, 1 और 1, -1. Now how do you know कि वो intersection point है? Because हमने 1, 1 को दोनों में put किया, power 0 आ रहा है, बराबर कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now if I consider a new equation, which is like
this thing, my question to you is, will 1 comma 1 and 1 comma minus 1 satisfy this Yes, new sir. equation? Yes, sir. Yes, sir. करेगा ना? Yes. तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे 1 comma 1 डालेंगे दोनों जीरो हो जाए, क्योंकि पावर विद रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्कल्स इज जीरो ना, ऐसे आ रहा है। तो ये नया सर्कल भी ए और बी से पास कर रहा है। डू यू एग्री? ठीक है, यस यस और नो? ओके। अच्छा, एक सवाल है, एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर इट टू बी अ सर्कल, lambda should not be -1 because फ्रॉम द x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म गायब हो जाएगी। if lambda is -1 then x square y square term cancels, then Not a it circle then. represents, what does it represent? It A line. represents a straight line which is satisfied by A and B. ओके, ए एंड बी तो वैसे भी करने वाले सेटिस्फाई, लैम्डा से फर्क पड़ता है उसको? लैम्डा की वैल्यू चेंजेस द फैक्ट कि ए एंड बी इसको करता है सेटिस्फाई नहीं करता। ए एंड बी तो हमेशा ही करेगा ना, पॉइंट्स तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स 1 comma 1 ये तो करना ही वाले ना, ये सुना। सो यहाँ पे कोई इशू नहीं, बट प्रॉब्लम इज कि वो सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी नहीं होगा, वो क्या बनेगा? लाइन पासिंग थ्रू, which is basically common chord का equation. So I will talk about that later. But did you understand the principle behind the whole thing? Okay. ये पूरा copy कर लो. I'll explain the lambda equal to -1 वाला part. उस पे भी मुझे कुछ बताना है. So could you scroll down slightly, sir?
Sir, what is S2 and S1? इक्वेशन ऑफ द सर्कल का वो LHS पार्ट. Sir, if it was -1, then both the circles will be of the same radius, and then. What is -1? Sir, if lambda is equal to -1. If lambda is -1, circle की radius थोड़ी change होगी. And that's what, sir. So S1 radius is equal to S2 radius. What? How? S1 and S2 are different circles. We are not saying okay S1 is S2 therefore S1 का radius is S2 का radius. ये किसने बोला है? Oh, sorry, sir. Sorry, sir. I made a mistake. सर वो आप लैम्बडा का पार्ट एक और बार बोलोगे वापस? Lambda is a variable. नहीं सर, वो But -1 lambda क्यों? वो मैं बताऊंगा. I'll come to that. Sir, lambda can be should be integers or it can be any number. Could be anything. ऐसा कुछ real number है. Real number. Okay. सर हो गया. ये हो जाए तो बता दो. Sir, done. Yes. सर 1 सेकंड आप स्क्रॉल अप कर सकते हो? हाँ. डन सर, थैंक यू.
Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Okay. Now, what I was saying was that if lambda is -1, then जो C1 plus lambda C2 equal sorry S1 yeah, जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको A एंड B तो करेंगे ही सेटिस्फाई। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पॉइंट्स तो कर देते हैं ना सेटिस्फाई A एंड B तो, बराबर 1, -1 एंड 1, 1। लेकिन जब लैम्डा -1 होगा तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, बराबर। और जब Yes. इक्वेशन ऐसे बनेगा, सो इक्वेशन एक्चुअली क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। अब इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर टर्म कट रहा है एंड वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ना, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है जो ए एंड बी से पास कर रही है, इट इज नॉट सर्कल विच पासेस थ्रू। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. ठीक है। नाउ सो basically moral of the story क्या है? If I have two circles and they're intersecting each other, if I subtract the two circles equation from one another, that gives me equation of common chord. Very simple example. Let's say I have this standard circle, and let's say I have this circle. Okay. Now, if I want to find common chord equation, okay, assuming they intersect, which we can figure out from D, R1, R2 and all that. So S1 minus S2 equal to 0 क्या है? It is this. ठीक है? And that actually gives me what? 3x minus 4y minus 25 equal to 0. तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कॉमन कॉर्ड है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो कॉमन कॉर्ड का दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन ऐसे निकाला हमने। यू अंडरस्टैंडिंग? So, हाँ, sir, can lambda be also 0? yeah, lambda can be 0. No, what's the problem? I said lambda can be anything other than -1. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, now we're going to do questions based on common chord family probably in the next class. But you need to revise this. अगर तुम revise नहीं करोगे तो फिर I will be forced to do a couple of questions now. वरना ये revise करना पड़ेगा. One thing I want to mention. Look at this diagram. ये common chord है, बराबर? Yes, sir. Yes. काम करते हैं. Let's slowly pull these circles away from each other. Okay, Yes. slowly. So let's say suppose So only one point of intersection of the circles. Common tangent. okay, अभी भी ये common tangent, अभी भी ये common chord है ना? Yes, sir. But the common chord has become smaller. A और B और करीब आ गए. What happens if I pull it even more? Sir, common tangent आ जाएगा. It will tend सर towards ए और 0. बी का So, डिस्टेंस तो वही है ना, स्मॉलर है वो।
Sir, the common chord will tend towards 0 when Sir, we put TCT. different. One transfer common tangent. Yes. हाँ ये देखो ये बन रहा है. एक मिनट मेरा हैंग हो गया. I need to restart my thing. Just a moment. हाँ correct. हाँ now okay. जब ये हमने इसको और दूर लेके आ गए तो ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं, बराबर. Yes. इसको कोइंसिडेंट पॉइंट्स So we can Point- say that ABC tends towards 0. हाँ ए बी आर टेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर. अच्छा ये फिनोमेनन हमने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व दिस. हम लोग जब क्वाड्रेटिक में करते हैं ना, क्वाड्रेटिक में जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये इसके अल्फा बीटा डिफरेंट है, और जैसे ये टच करता है तो क्या होता है, एक ही बोलते हैं हम root में। इक्वल रूट्स ना. एक रूट आता है. Yeah. इक्वल रूट्स एक्चुअली एक रूट नहीं आता, दो रूट्स आते हैं, दोनों इक्वल होते हैं. हाँ सर. मतलब वो है दो रूट्स लेकिन वो एक्चुअली कोइंसाइड कर रहे हैं. That is different from just saying that it has only one root. Okay, one you are implying it's a linear equation, the other you are implying equal roots है तो quadratic. समझ रहे हो? उसी Yes, तरह sir. यहाँ पे भी there is one point of intersection. ऐसा अभी ऊपर से देखेंगे ऐसा लगा एक ही पॉइंट है, लेकिन they are two coincident points. You understanding? So whenever it's like two coincident points, it's like ये touch कर रहा है. So two समझ रहे हो? coincident You're understanding the points difference? means it goes, touches and goes back. What? So two coincident points means it comes, it touches and it goes back. Where if it was one route, it would like just go through it. Yeah, sort of. You could say. Which means that ये diagram ऐसे थोड़ा सा इसको slightly apart, you can just think of this की you're just pulling the circle slowly, and then to the point where they merge. समझ रहे हो? So the common tangent theorem भी same हो जाएगा. Correct. In fact, so हाँ, that is spot on. So that is कि the common tangent family and the common chord family are almost identical only. Because you can think of a tangent to be a chord only where the endpoints are coincident, sort of. You getting what I'm saying? Yes. ठीक है. तो इसमें जो थ्योरम 1 हमने लगाया है वो कॉमन टेंजेंट फैमिली में भी एप्लीकेबल है, बट वील डू दैट नेक्स्ट टाइम. ठीक है. सर आपने जो एक्सक्लूडेड वैल्यू बोला था लैम्बडा का -1, अगर वो ही डाला तो वो- कॉमन कॉर्ड मिलेगा ना. हाँ वो कॉमन कॉर्ड भी निकलेगा, और हाँ कॉमन कॉर्ड निकलेगा. हाँ ये मैंने जो एग्जांपल दिया ना, S1 - S2 इज फॉर्मूला फॉर कॉमन कॉर्ड. ये फॉर्मूला है, इसको लिख देना यहाँ पे. So the smallest like member of the family of chords was when AB's diameter and tangent it was point. So is it because like we keep making the distance between them smaller to get tangent family? नहीं, we are not making it smaller. Common smallest member of the family में हम AB के circles को हम touch नहीं कर रहे हैं. Circles are the same now. यहाँ पे हम सर्कल्स को सेपरेट कर रहे हैं, सो दैट मींस वी आर एक्चुअली चेंजिंग द फैमिली. ठीक है. सर मतलब जो दो सर्कल अगर टच नहीं इंटरसेक्ट नहीं भी, यार टच भी नहीं कर रहे हो, उन लोगों को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं इनका इक्वेशन, तो भी एक स्ट्रेट लाइन तो आता है. तो वो कौन सा स्ट्रेट लाइन होता है? वो स्ट्रेट लाइन जो आता है जो तुम बोल रहे हो, वो हम लास्ट पार्ट जो थर्ड फैमिली हमने बताया था ना, यस सर. वो उसमें आएगा, व्हिच वी कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. सर ऊपर स्क्रॉल करना. ठीक है. यस सर. ऊपर का किया था ना पहले, नहीं किया था. नहीं हो गया. ये करो. सर आज के लिए इतना ही. हाँ
sir, you will be taking the probability chapter, sir. Sorry. Oh, sorry. Actually, after this chapter is probability, right? No. Will be parabola. Parabola, but probability, sir, then that would be That is taken by different. Second track. That'll be like after coordinate geometry ends, right? Would be okay. इतना तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कौन सा टॉपिक आने वाला है? 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 5, पहले ये करो जो चल रहा है उस पे। Sir, if we've written all of what you've shown till now, can we leave or should we stay? No, I'm not doing anything more. ये copy हो गया तो। Okay, sir, I'm done. So I'll Sir, can leave. you scroll Thank you, down? sir. Yeah. सर आपने हम लोग को स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था? Reflection formula. यस सर. Did I? Let me check notes. Sir, I think it was there. Reflection. X minus x1 upon a is y minus y1 upon b. ये वो formula. हाँ सर, हमने रिफ्लेक्शन किया है, रिफ्रैक्शन नहीं किया है. So can you scroll up? I have a doubt. हाँ, that's it. You can leave. क्या Sir, wait, I would- आप so थोड़ा और ऊपर. या तो यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया इक्वेशन, आप वो एक्सप्लेन करोगे क्या फिर से? क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? लाइक आई सेड ये सर्कल मैंने लिया है, ऊपर है ना यहाँ से. क्या डाउट क्या है इसमें? व्हाट डिड यू नॉट गेट? So means whenever explaining this, consider this equation, I was disconnected by that part. So ये वाला पार्ट. Did you get the intersection point in these two? इन दोनों का, इन दोनों को करेगा सेटिस्फाई. ये तो पता था कि नहीं? Yes sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1,1 भी इस इक्वेशन को करेगा? इस वाले फैमिली Yes. वाले कर रहे हैं. 1,-1 भी दोनों को कर रहे हैं, मतलब ये मतलब पूरे को कर रहे हैं. हाँ. तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है जो इंटरसेक्शन से पास करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ए एंड बी से. समझ रहे हो? Yes sir. सर आप एक बार कॉमन कॉर्ड फैमिली पे जा सकते हो. हाँ, सॉरी. कॉमन कॉर्ड फैमिली. हाँ, कॉमन कॉर्ड फैमिली का क्या? सर कैन यू जस्ट स्क्रॉल टू दैट पार्ट, वो डायग्राम जो. ये यस सर, वन. सर वो जो बड़ा वाला सर्कल है पर्पल, उसके लिए भी ए बी कॉर्ड ही है ना? हाँ. ओके, थैंक यू. तो नीचे स्क्रॉल करो ना.
Hello, sir. हाँ Can you please call me? तो इसके नीचे कुछ नहीं है क्या? नहीं हो गया डन। ओके सर। ओ एक मिनट ये था हो गया। Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.